Assalamu alaikum, everyone. I hope everyone can hear my voice. Yes, we can. Yes, we can, sir. Excellent. Yes, we can. Excellent. So I welcome you all the tech companies. It's really exciting to see. But we have about 45 participants right now, and representing more or less 45 companies. So I welcome you all. My name is Abadan Mohajir, and I am part of the investment banking team of Equity Securities Limited. And we have been selected as the financial advisor for the first lot of PSEB's initiative of listing 40 companies on the GEM board at the Pakistan Stock Exchange. So with me, I have my team, Dabir Hassan, who's so I have Sami. Can you आप वो mute कर सकते हैं? I think there's. Sure. So I have with me Mr. Dabir Hassan, who's the Assistant Vice President, Investment Banking, Equity Securities. Then on my right is Uwais Ibrahim, who's also part of the investment banking team, and Zaim Haroon, who's also part of the investment banking team. Then from PSX, we have been joined by Raida Latif, who's the Head of Marketing and Business Development at Pakistan Stock Exchange, and has been very, very active in developing this GEM board, and has been with us through this whole process. With her, we have Sami Shakir, who's the Business Development Officer at Pakistan Stock Exchange. Then from Pakistan Software Export Board, we have Mr. Talib Baloch, who's the Director of Finance and Projects, has a very, very vast experience with tech companies. I'm sure all the participants know him very well. He has been very active throughout the process of making this whole initiative possible. Then we'll be joining Mr. Usman Nasir, who's the MD of Pakistan Software Export Board, will be joining us shortly. Along with him, Mr. Zishan Khatak will also be joining us shortly. So without any further ado, I welcome you all, and I would like Pakistan's Stock Exchange team to begin with their presentation, their part of the session, and then we'll take it from there. So over to you, Raida and Sami. Assalamualaikum everyone. I am happy to be part of this session, and first of all, congratulations to PSEB for actually achieving a बहुत major milestone hai, where you signed up the first advisor for the listed companies, and pehla cohort aayega abhi. Inshallah, we will be here to support and facilitate जिस तरह हमने बाकी और process में सबको किया है. And I will begin with a little, I hope everybody can hear me. Okay. Raida, we can hear you. All right. I'll begin with a brief introduction of the GEM board, जिसमें we created this GEM board back in 2020, and इसका जब launch हुआ तो COVID had actually started, so we couldn't go with a major bang. However, with the help of our advisors, consultants, PSEB, हमने काफी अच्छे progress किए on that, and mashallah we have today 2 listed companies on the GEM board. Other than that, there are few IT and tech related companies also in the process of getting listed. Approvals में है कुछ 2-3 के approvals हो चुके हैं और वो listing की तरफ जा रहे हैं. We've also had certain sessions with NIC, so various potential companies, tech companies से भी बात हुई, because this seems to be the ideal opportunity for the tech companies to come onto the listing platform. एक formal domain में आए
और इनिशियल इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट भी मिले या सेल ऑफ शेयर का अपॉर्चुनिटी भी मिले एंड funding of course because this will strengthen the what do you call the companies itself. आपकी negotiation power strong होती है. आप जब funding के लिए भी जाते हैं second third rounds of funding या further JVs के लिए भी जाते हैं internationally भी आपकी एक negotiation power strong होता है. Other than that you become very visible to the rest of the world also because जो companies stock exchange पे आती हैं उनको international fund managers भी देख रहे होते हैं. So even if they don't invest directly, they can invest over the various times. Once you're a listed company, they can participate in the primary listing option also जब issue हो रहा होता है. So GEM board actually is focused towards the growth enterprise market जो growth oriented businesses हैं, whether they're small, medium or even greenfield operations when they want to come and raise money to set up their businesses. What you have to do is that you have to be a registered with SECP. So even if you have a holding company abroad, you have a subsidiary here which can be registered with the stock with the SECP, but in the public entity. So if you are registered as a private company, you can convert your registration status to a public entity. If you need to reach in order to be eligible, you need to have a post-issue paid-up capital of 25 million. So even if you're not at 25 million at the moment, you can raise money to reach that point. And this is that's why we've kept it very at a very lower side. कि post-issue आपके पास 25 million का paid-up capital हुए, then you can become eligible to apply for the GEM board. On the other side, there is no cap. So even if you were coming to a size of 500 million or 700 million or a billion worth company, that's perfectly fine. You can still be part of the GEM board. You can raise money for fresh capital or fresh equity, or you can also list for sale of share, or you can make a combination. So you do a partial sale of share, so you also liquidate a little bit of the initial investment, and the remaining part you can do for fresh issue, fresh capital. You need to have audited financial accounts for at least 2 preceding years if you've been in operation. If not, then that requirement is waived off. You need to have a basic company website. You need to be able, in terms of issuance, you need to issue just up till a sorry, in order to you need to issue or give out 10%, minimum 10% holding. So a lot of companies and entrepreneurs have this concern that if somebody external will come and they might dictate and they might say कि हम shareholders हैं. So from that perspective, आप minimum 10% float करें in the market, and you can still keep 90%, or you could go up to 60-70%. So that's really your call. But the good thing on this is that you will have multiple investors, so that it's not one party that's holding the other, whatever percentage you give out in the market. Other than that, you have an option whether you can decide your price and say my company's share price would be X. That is called the fixed price method. Or you also have the option of book building, which is more like bidding. So investors will look at your will look at your information memorandum, look at your business plans, your risk modeling, all that, and then take a call with what kind of price they want to bid for your company shares. For book building, however, you need to be either giving out, the issue size basically should be either 5 million shares or up to 50 million. You need to create an information memorandum, which is a technical term, but in simple words, it's like a pitch deck that you create to for your investors when you go out for your series or round 1, round 2 fundings for your foreign investors. So you create a pitch deck. This information memorandum is a
is a similar thing where you put up your business plans, your previous where you put up your previous information and everything out there. I'll just share these slides as the host has given me the permission now. Okay, here you go. You can see it. I hope my screen is visible. Yes. So these are a few points from where I was just telling you. In terms of compliances, you need to comply with the Code of Corporate Governance, which is selectively applicable. It means that there are only 4 clauses out of the entire Code of Corporate Governance that you have to comply with, and that too in over a term of 24 months. You have that much time to reach the compliance level. And next slide, may I tell you the 4 clauses also. The sponsors, अच्छा एक और perspective है कि जो sponsors हैं, when they issue and list on the exchange, you need to keep your shareholding 100% for at least 1 year. So after issuance, अगर आपकी shareholding 60% है and आपने 40% roll किया in the market, you need to retain that 60% for some time, for at least 1 year. And then उसके बाद subsequent years में आप उसको release कर सकते हैं, 25% तक भी जा सकते हैं अपनी holding का over 3 years. उसके बाद then you can actually go down to 0 also and release all your shares in the market also, your holding also. So ये एक थोड़ी सी commitment, because the owners are the experts of the business and the sponsors should not exit right away. That's a concern, and that's why हमने ये चीज इसमें रखी है. Sponsor with इसके अलावा minimum subscribers आपको चाहिए होते हैं 10. So even if there are 10 people who are subscribing to your shares that you float, you can have the listing issuance. There's no profitability requirement. That's one major thing, because listing on the stock exchange actually requires that companies have what do you call profitable, generally main board के लिए profitable companies prefer की जाती हैं, but for the GEM board there is a requirement, there's no requirement कि जी आप profitable हो, even if you're a loss making entity, but you have a strong business plan, you have a defined projections and a good risk model, you will be considered for that, for listing. आपकी approval होती है. अच्छा, next, why list? अच्छा, I think there are questions coming in as well. So book building and fixed price method I had explained. There's a question related to that. Book building is where different investors, potential investors would come and bid for your. Sorry, yeah. Rather, we'll take the Q&As at the end of the call. Later? Okay, perfect. ठीक है. So we'll, that's better. Everyone questions once we start the Q&A section. Thanks. Okay. Why list? When we talk about listing, it's not just about, a lot of times हमारे potential investors हम पूछते हैं कि we are cash rich, we have lots of funds available, why should we list? Why would it make sense? And we tell them कि yes, definitely it gives you a long-term working capital and helps you expand and whatever. So वो financial aspect तो है. Other than that, आपका debt limit enhance होती है. When you go to banks, you can not only if you're larger in size, you can actually get a better debt के ऊपर limits जो आपको banks short term के लिए भी आप borrowing कर सकते हैं. Other than that, when you work with banks for money transactions and all, उसमें भी certain requirements होती है. किसी को LC खुलवानी होती है, किसी को servers import करने, किसी को so that kind of also puts you in a low risk category. A listed company is reviewed when the banks look at a company and it's a listed entity, they give a lower risk rating to that entity. So that also helps you with your banking client, relationship.
It will enhance your company's public profile. Right now, होता ये कि tech firms are visible only within a certain circle. या अगर आप कंज्यूमर उसमें है तो आप विजिबल होते हैं, बट अदर देन दैट आपके इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स एज सच जो स्टॉक मार्केट के हैं, ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स हैं, डॉइचे बॉस है, दे आर नॉट रियली लुकिंग एट दिस होल segment. Once you're a listed company, आपका एक public profile होता है, and then people look at you every time they open the screen. Your symbol is visible and your prices are being quoted. So step 1 में जब आप आते हैं listing के लिए, your advisors do a lot of marketing. They circulate your IMs, they hold road shows and presentations and talk about the strength of your business. So it's marketing to improve your brand profile. Other than that, HR capital के perspective से अगर देखें तो people want to work with good listed companies because that that gives them that special edge. And then अगर आप ESOPs की भी बात करते हैं, employee share stock options की, तो उसकी भी valuation is easier and to exit also is easier. You obviously have better relationship with your suppliers because your suppliers see you as a listed company. They have more confidence in your entity and transparency भी होती है. Company valuation में भी आपको बहुत फायदा होता है. Times with your listed company and you're negotiating with various JV partners and all, तो उसके अंदर भी आपकी valuation बेहतर आती है. Plus your investors are also able to put a price on your share, which is through legitimate means. एक stock market के अंदर आपकी जो price नजर आ रही होती है. And last but not the least, सबसे important चीज business continuity and succession planning. So your business becomes like a built to last business because you're not running the show. You're actually leading from the board level. You're part of the management team, but you're still at the board level and you have professionals running your organization. Advantages GEM board के अंदर, it's very cost effective. That's the most major advantage. आप stock exchange के अंदर 50,000 से minimum जो amount है इसकी fee है listing की हमारी. Exit and capital raising में भी आपको help करता है. Once initial sponsors want to make an exit or partial exit to liquidate a portion of their shareholding, so this will help you. You have clear regulations and ethics structure. अभी right now क्या होता है, अगर आपकी subsidiary ने profit पाकिस्तान में बनाया है तो आपको इसको बाहर ले जाने में problem होती है. आपको कोई बाहर entity, smaller entity में invest करना है तो आपको problem होती है. In the stock market structure, it's much more easier to take money out because in and out दोनों में आसानी होती है. There are no questions asked. It's the proper clear regulations are there and speed में हो जाता है. वरना normally क्या होता है, आप state bank में भेजते हैं, फिर वो एक application जाती है, फिर वो review करते हैं. So that whole process is quite cumbersome. Through the stock market, if you work, if you're listed entity, तो आपका वो बहुत clear है, transaction easy होती है. Flexible fundraising, again आप 2-3 rounds of capital raise कर सकते हैं on the GEM board also, because in a typical structure, once you issue shares, once you're listed, आपने उस वक्त issue किए और आपने पैसा उठाया, फिर after 1 year, you can go for a second round. You can issue bonus shares, you can issue right shares, you can share the profits through dividends. ये तो खैर profit sharing है, but you can go with a second round also through a right share issue into the market. और दूसरा आपके पास ये भी तरीका होता है कि आप मेन बोर्ड पे जाके लिस्ट होएं, अपने आप को एक further round of वो उसमें करके, and you can migrate to the main board. In terms of brand building, it's very positive for your brand. And last, capital gains tax is very clear. Sale of shares of unlisted company में बहुत income tax के काफी confusing वो होती हैं, complexities होती हैं, but when you're a listed company, एक सीधा capital gains tax होता है, and that's why it's less cumbersome. Corporate governance की जो compliance की जो requirements हैं जिसको abide करना है, and within 2 years, or that's also not locked in वो, because you still after 24 months अगर आपने इन 4
clauses को comply नहीं किया, you can ask for an extension also. So you need a minimum number of directors, 7. Minimum number of independent directors should be 1/3 of the board. और ऑडिट कमिटी होनी चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों और फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बोर्ड पे. सो आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन फॉर स्टार्टअप्स एंड टेक फर्म्स आल्सो. कौन इन्वेस्ट कर सकता है? हु आर द पीपल और द इन्वेस्टर्स हु कैन कम? इट्स नॉट द जनरल पब्लिक. वो लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते जेम बोर्ड कंपनीज पे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज they don't have that risk appetite, they don't have that understanding to hold on for a longer period or to take a view or understand the risks and rewards associated with the gem board companies. So उसके अंदर accredited investors आ सकते हैं. In terms of institutions, all financial institutions can come in. Right now, if we look at the insurance companies, we look at asset management companies, we look at banks also, for that matter, a lot of these institutions have lots of cash available, and that money can actually come into your enterprise. Trust funds and securities brokers हैं, ये invest कर सकते हैं. Foreign investors भी आपकी entity में, once you're up for your investment, IM is for information memorandum is floated. और अगर आप बुक बिल्डिंग या फिक्स प्राइस दोनों में जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन के मेथड्स बहुत क्लियर हैं एंड they are definitely circulated to the and visible to the international audience. So foreign investors will also be looking at your company. Any other entity which is specified by the commission as an institution can invest. So pension funds can also come in. Other than that, individual level पे देखा जाए तो accredited investors होते हैं जिनकी minimum worth should be 5 million. So they can also invest in your company. Listing fee, as I said, 0.05% of post paid up capital, and which is capped at 50,000. So अगर 50,000 से ऊपर जा रही है तो that will be it won't be more than 50. Annual listing fee is 50,000 on paid up capital. This is a recurring fee. और अगर आपकी साइज 100 मिलियन से ऊपर होती है तो फिर 200,000 per annum is the cost. Responsibility of advisors में अगर देखा जाए तो consultants and advisors की काफी major role होता है in the listing process. They help and prepare you for listing. They do the entire groundwork for your listing journey. They also help you arrange investors for your company. They do the marketing and they take you for roadshows. They help you with the drafting of the information memorandum. Obviously, बहुत सारी information investors के पास होती है, बहुत सारी information sponsors के पास होती हैं. उन्हीं के ऊपर build करके they will guide you. Other than that, आपके behalf पे आपकी application form exchange को submit करना, exchange के साथ follow through करना for any more requirements, any queries, organizing those meetings, and last of course जब आपका book building या fixed price के through issue start होता है तो वो पूरा process from roadshows to pitching to eligible investors and to facilitate that process, that is all managed by the advisor. So the advisor is basically your partner in the listing journey. कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको आपकी वेबसाइट पे डालनी है. बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द ईयर एज पार्ट ऑफ वंस यू बिकम अ लिस्टेड कंपनी, you need to give information on your board of directors, past financial performance if audited, QCR audited accounts हों, management details, shareholding किस तरह है आपके साथ कौन सी group और associated companies हैं. Once when you are out there to list and issue your shares, for information memorandum definitely place होना चाहिए. Other than that, half yearly progress डालनी होती है आपको, जो कि over the period of time आपको update करनी होती है. You need to disclose price sensitive information after listing, because once you're a listed entity तो आप किसी और के साथ partnership कर रहे हैं, कोई बड़ा deal हो रही है, business performance क्या है आपकी, ये सारी चीजें fall into a category of material information, and that has to be put up on your website. Any change significant in your financial condition also falls there.
Other relevant points, advisors to the gem listing, वो तो बहुत सारे हैं, मगर I think right now we're talking with AKD. AKD has the edge that they are the first ones to bring a first listed company to list on the gem board. So they have done a lot of work, and groundwork wise भी उनकी knowledge काफी strong है on firms that are eligible for the gem board. Obviously, they are the CTIs for the main board also. So once you're ready and you're settled on the gem board, they can actually help you complete your journey to migrate onto the main board as well. ये कुछ फर्क है between gem board and main board. I don't think this is something you need to, I mean, really see. Procedure, as I said, you appoint an advisor, you will have your business plan that will be evaluated. You need to have finalization of underwritings if you're going with a fixed price, because fixed price में होता है कि आपके इतने shares at this price is available in the market, and you need an underwriter who takes the guarantee कि जी अगर subscribe total नहीं हुआ तो फिर the underwriter will take those shares. Regulatory filings, just exchange के पास आके आपकी application, your documents, all that, those submissions are called regulatory filings. So the advisor manages that. They manage the marketing. They help you with the subscription and balloting, and post issue clearance तक ये पूरा आपका process है. When you get the money, what will be your growth strategy? You might migrate to the main board. So once you have a minimum post-issue capital of 200 million, you need to prepare a prospectus, which again is a detailed version of the pitch deck. And you complete your compliance with the Code of Corporate Governance, so you can list on the main board. That could be your second round of funding also. Resources and tools यहाँ हमने दिए हुए हैं, forms, checklist, documents इन links पे मौजूद हैं, PSX की rule book का section मौजूद है, QCR rated auditors की list मौजूद है, because they're not just the big five, so there are a lot of options available for you to go for your audit, and list of GEM advisors भी मौजूद है. So that's more or less from my side. Over to you, Abadan. Thank you, Raida. That was extremely informative, a very detailed overview, I must say, and I think it's going to be quite helpful for all the participants. Now, I would like to request Talib Baloch to say a few words, and then we'll proceed towards the TORs. Talib sir. Video start. Abadan sir, kindly allow the video. अबदान साहब आप सुन रहे हैं? जी सर, वीडियो ऑन कर दीजिएगा आपका। जी सर, अभी कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले रहमत देना चाहूँगा अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर उस्मान नासर, जिनके साथ हमने मिलकर प्रोजेक्ट कंसीव किया। ही इज प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल ट्रांसफॉर्मिंग PSEB into big organization, transforming our tea industry and taking it to the next level. तो वो थोड़ा सा तब्दील कर दें तो फिर मैं थोड़ा सा मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उस्मान नासर साहब। Thank you Talib sir. Thank you Abadan. Great work that you guys are doing there. Raida, wonderful presentation. Sami, thank you. So this project was a very important project when we started. Actually, the two flagship projects that PSEB has, one is this, the other one that we are doing with the 25 STPs, the software technology parks that we are building all across the country. Now, why this project is particularly of interest to us? अब तक होता ये रहा है कि IT इंडस्ट्री ने अनफॉर्चुनेटली अपने आप को भी एक छोटी इंडस्ट्री के तौर पे बिहेव किया है,
और दूसरा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर भी ने आईटी इंडस्ट्री को अब तक वो अटेंशन नहीं दी जो उसको डिजर्व करती। दोनों फैक्टर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। So when we realized कि मामला है क्या, we started understanding the problem and we thought कि this can be solved through the GEM board listing. अक्सर आईटी इंडस्ट्री की जो जब हम इंडस्ट्री के हम देख रहे होते हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है कि हम इस इंडस्ट्री को किस तरह से असेस करें और इसकी जब हम इन कंपनीज के को हम फाइनेंशियली हम इसकी असेसमेंट बता रहे होते हैं तो एज ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लोगों के पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आईटी कंपनीज, क्योंकि आईटी कंपनीज एसेट होल्ड नहीं करती, उनके ऑफिसेज अपने ओन नहीं होते, उनके प्रोजेक्ट्स इंटेंजिबल होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स इंटेंजिबल होती हैं, उनका ब्रांड वैल्यू को किस तरह से असेस किया जाए, उमूमन B2C इंटरेक्शन नहीं होती, तो बहुत सी चीजें जो है वो हिडन होती हैं, बहुत सी चीजें की असेसमेंट मुश्किल होती है, which is why financial sector stays out of the funding and financing the IT industry mostly. हमारे यहाँ चूँकि ये मामला भी लिमिटेड था अब तक कि हम आईटी कंपनीज आप देख रहे हैं कि मेन बोर्ड पे भी आईटी कंपनीज 10 या 11 ही हैं टोटल ऑल टुगेदर। उन 10 या 11 में से भी 2 या 3 जो है वो एक ही ग्रुप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो हमें रियलाइजेशन हुई कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सो वी क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट। The other issue that we saw and we realized कि जो कंपनीज हैं हमारी जो अच्छी खासी कंपनीज हैं जो 4 मिलियन 5 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रही हैं थ्रू स्टेट बैंक, उनका ये डेटा नजर आ रहा है आपको, और वो 4-5 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी जो है वो विजिबल नहीं है, उनकी विजिबिलिटी नहीं है और उनको अक्सर ज़रूरत होती है फंडिंग की ज़रूरत होती है उनको अक्सर एक्सपेंशन करने के लिए, नई प्रोडक्ट लाइंस लाने के लिए, नए लोगों को हायर करने के लिए, नए ऑफिसेज लोकली और इंटरनेशनली खोलने के लिए, तो फंडिंग उनके पास अवेलेबल नहीं हो पाती। तीसरा जो हम एक चीज देखते हैं और हम कहते हैं कि उस्मान साहब पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को 350 मिलियन डॉलर की फंडिंग आई है, दैट इज करेक्ट। 2 चीजें इसमें भी देखने वाली हैं। देखिए स्टार्टअप की जो फंडिंग है, जो हाउ अ वेंचर कैपिटलिस्ट एक्ट इज वेरी डिफरेंट टू ए मैच्योर स्टेज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न। For a startup, the VC would request for saying कि ठीक है मुझे 18 महीने के अंदर 2.5x ग्रोथ चाहिए या 3x ग्रोथ चाहिए, और वो इग्नोर कर देते हैं even good companies which are doing 35 to 40% margins, even at times 50+% margins, which is very common in tech industry, which is very common in software development, software consulting industry. तो क्योंकि ये चीजें इग्नोर हो जाती हैं और ये अच्छी कंपनीज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि दे हैव अ ग्रेट बॉटम लाइन, दे हैव अ ग्रेट टॉप लाइन, उसके बावजूद ये कंपनीज जो है वो फंडिंग लेने से महरूम रहती हैं। सो वी वांटेड टू एड्रेस दैट और ये प्रोजेक्ट काफी आसान कर देगा, इसकी एड्रेसेबिलिटी को काफी जो है वो मामला सीधा हो जाएगा। So once our companies are able to raise fundings from this market, they would be able to, as Raida said, कि उनको भी पैसे भेजना, पैसे लेके आना दोनों बहुत आसान हो जाते हैं। नए कंट्रीज के अंदर वेंचर्स खोलना, पार्टनरशिप्स खोलना, ऑपरेशंस इनेबल करना वो आसान हो जाता है। दूसरा आपके पास किसी एक इन्वेस्टर के रहमो करम पे नहीं रहते। The market has invested into you. The brand that you carry now becomes more glorious. It's becomes a household name eventually. So ये काफी benefits हैं इस project के, and that's why and how we conceived it. So I believe Talib Saab has more to say about this and more to shed light on. And I also would like Zishan Rahman Khattak, our Chief Commercial Officer, to say a few words on the project. और इसके बाद आप लोगों को भी सवाल हो तो सवाल पूछें। Thank you.
थैंक यू उस्मान साहब। मैं उस्मान साहब की बात को ही आगे फॉलो करूंगा। इन्होंने काफी एक्सप्लेन कर दिया प्रोजेक्ट। हमारा विजन ही यही है बेसिकली कि जब हम अपनी आईटी कंपनी को देखते हैं ग्लोबल फ्रंट, तो वहाँ पे ये डांट पे नजर नहीं आती। एक प्रेस्टीज होता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज का राजा ने जैसे बताया, जब आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं तो बेसिकली यू बिकम विजिबल टू द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, आउटसोर्सिंग कंपनी। वो आपको क्रेडिबिलिटी अपनी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कितनी अच्छी कंपनी हैं वगैरह वगैरह। और बेशुमार हमारी ऐसी कंपनी है जिनकी स्टेजेस ऐसी आती हैं जहाँ पे उनकी ग्रोथ जो है स्टैग्नेट हो जाती है, बिकॉज पैसा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। जब भी आप एक्सपेंड करेंगे आपको पैसा चाहिए, तो पैसा जाहिर है कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहेगा, प्राइवेट इक्विटी होगी, वेंचर कैपिटल होगा, या आपका लिस्टिंग के ऊपर आ जाए। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने वो फॉर्मेलिटी जो पूरी नहीं कर सकती छोटी कंपनियां या मिडिल साइज की कंपनियां, उनके लिए जेम बोर्ड क्रिएट किया है, ताकि यहाँ पे उनकी इंटरेक्शन इन्वेस्टर से हो और इन्वेस्टर को पता चले कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल नहीं है, दूसरे सेक्टर के अलावा आईटी बहुत बड़ी एक सेक्टर है जिसके अंदर पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट्स का, और यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं, ताकि आपको पैसे की अवेलेबिलिटी मिले और ये कंपनियां जो है ग्रो करें, उनके अपने जो एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान है उनकी फंडिंग हो सके। और एक दफा जब इनको फंडिंग होती है तो वो सारे बेनिफिट जो रायदा ने एक्सप्लेन डिटेल में किए हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, यू बिकम विजिबल। इससे कंट्री परसेप्शन जो है ऑटोमेटिक डेवलप होती है कि जो हम एक इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान इज अ टेक नेशन। यस, जब ये कंपनियां रडार के ऊपर आएंगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इनको फंडिंग मिलेगी मिलियंस एंड बिलियंस रुपी। वो डिपेंड करता है इनके क्रेडेंशियल्स और इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर हाउ बेटर दी फ्रैक्ट। उसके लिए हम और एकेडी सिक्योरिटी और जो हमारे आने वाली एडवाइजर होंगे, हम आपको गाइड करते रहेंगे, आपकी रिस्ट्रक्चरिंग में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी जहमत देता हूँ अपने विचार पता साहब को भी इस पे करें। तो बेसिकली आई strongly urge companies, IT companies to take full advantage of this very unique opportunity, इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि हम उनको वो जो एक उनकी ग्रोथ के अंदर एक बेसिकली एक हिंड्रेंस है एलिवेट है उसमें हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Assalamualaikum. I think enough has been said by MD and Talib Saab about this project. Globally हम देखते हैं कि a lot of IT companies, even वेबिनार चल रहा है वो अटेंड कर रहा हूँ। they have a lot of access to finance. In Pakistan थोड़ी सी regulatory requirements भी हैं और थोड़ा सा financial जो IT और financial sector है उसका भी वो interlink अभी इतना effective नहीं हुआ जहाँ पे they are able to get access to that finance. और we see in the Simi Valley के वहाँ पे there are IT companies जो सिर्फ idea pitch करते हैं and they have वहाँ भी VCP investors होते हैं उसकी चेक भी साइन कर देते हैं, they start investing just at the idea stage. In Pakistani environment, we want to get there eventually, but currently this is a very big opportunity for our IT companies, which is a very significant sector of the market. And अगर आप exports भी देखें, जो impact देख रहे हैं, अभी the last couple of years, you see the impact of IT exporters in the country. So this is a huge market, and there's a lot of potential in the market, not only for the companies themselves, but for the capital markets, for the banking, for the financial sector. कि इस ना सिर्फ ये companies इसका फायदा है, but eventually these capital markets and the financial institutions would have these avenues where they can have financial instruments that are very promising and are made available to them, and they are able to take exposure in this segment of the market. The Pakistani software companies are actually going solid, and इनका जो year on year अगर आप growth देख रहे हैं और exports की growth देख रहे हैं, even compared to our neighbors, we are actually faring very well. So I think it's a very good start, and initially we'll have that experience and we'll learn. But eventually, not only the software companies, but the financial companies, the PSX, everyone would have that knowledge. Okay, ugly or usse ugly, we'll be able to roll out these new companies on the exchanges much quicker, and inshallah we'll see the benefits of it. So we are looking forward to it, and we are very positive about the whole development that is taking place. Thank you. Over to you, Abdam.
Thank you, Talib Saab. Thank you, Usman Saab and Zishan Saab. I think काफी informative और काफी clear vision है in terms of आप लोग का जो initiative है. I think it's a wonderful initiative और इसमें this is just the starting. इसमें तो हम अभी first उसमें we're talking about 8 companies, but मेरा ख्याल है जितना पाकिस्तान का potential है, we will definitely have a huge chunk of companies who are interested in getting listed on the GEM board. So अब मैं थोड़ा सा TORs की तरफ आ जाता हूं ताकि हम अपना ये डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लें. आप लोग सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? I think it is. So इस डॉक्यूमेंट के पहले शुरू के जो पेजेस हैं वो आई थिंक कवर हो चुके हैं, जिसमें तालिब साहब ने और राइदा has covered the comparison of GEM board and the main board, so I won't go through those details. Basic eligibility पे अगर आ जाए तो that has also been covered, और अगर इससे related कोई questions होंगे तो हम Q&A session में उसको cover कर लेंगे. So I'll now jump to the list of mandatory documents. So basically, if you can see on your screen, there is a list जो आपने इस TOR RFP के साथ आपने submit करना है. So there are about 6 forms. Form 1 is basically a proposal cover letter, जो जिसका format इसके साथ attached है. We look at it as we move forward with this document. Then we have a form 2, which is the power of attorney. वो भी उसका फॉर्मेट है. अंडरटेकिंग भी है, उसका भी फॉर्मेट है. एप्लीकेंट की कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, वो फॉर्म 4 है. फॉर्म 5 इज द एप्लीकेंट की बिजनेस इंफॉर्मेशन, एंड फॉर्म 6 जिसमें हमने की मैनेजमेंट की सीरीज रखी है. इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन द PSEB's वैलिड मेंबरशिप डॉक्यूमेंट, फिर NTN सर्टिफिकेट, copy of audited financial statements, जो preferably last 3 years की हो, जो QCR quality control review के panel में जो auditors हैं उन लोगों ने किया हुआ preferably. फिर detailed corporate profile जिसमें highlighting the name of the group and the associated companies, business activities, industry information, everything related to your company. Then one of the most important elements of your submissions is the purpose and proceeds utilization. जो आप funds raise करना चाह रहे हैं उसको किस तरह से आप utilize करेंगे, along with a financial projection जिसमें preferably 5 years आप next 5 years का future financial plan cover करें. So this is the list of mandatory documents. Then I'll, before moving to the evaluation criteria, which is I think the most important part of this document, I would like to briefly discuss the forms. So form 1, as I said, is the proposal cover letter. इसमें हमने एक format दिया हुआ है. You need to provide this on the company's letterhead. You need to authorize signature. इसको authorize signatory sign कर दें. The complete format is there. It's very simple. It just needs to be printed on the company's letterhead. Then there is a power of attorney. So power of attorney, as you all might be knowing, is basically a document जिसमें आप एक बंदे को authorize कर रहे हैं कि वो सारी communication related to the submission of this RFP या आपको वो उससे कोऑर्डिनेट किया जाएगा. तो इसमें इसका भी फॉर्मेट है. इसको आपने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करना है और इस फॉर्मेट को और उस पे डिटेल्स अपनी फिल करके ऑथराइज सिग्नेटरी अपना साइन करे और it's as simple as that. Then if you look at form 3, so form 3 is an undertaking जिसमें basically 3 parts में undertaking divided है, जिसमें अगर आप देखें तो first part is the promoters, sponsors, controlling directors are not promoters, sponsors, directors in other listed companies which are default of any listing regulations of PSX. None of the promoters, sponsors, or controlling directors is a sponsor, controlling director of a company which was listed during the last 3 years due to delisted during the last 3 years due to non-compliance
of listing regulations. अब ये जो basic ये this is applicable, this is part of the law, this is part of the basic law of while you're listing the company, तो उसकी undertaking, every company has to give this undertaking whether it's being listed on the GEM board or the main board. इसका second part जो है, the issuer is not associated company of any other listed company over which it has control, which has violated listing regulations. So ये basic जो है laws हैं जो हमने इधर mention किए हैं, ये भी आपने as it is अपने company letterhead पे print करना है. इसका third part है, its chief executive officer has not served or is not serving as chief executive of a listed entity which has significantly violated. So ये सारी चीजें हैं, ये these are very simple, plain and simple things, and I am sure इसमें ये सारी undertaking, सारी companies जो सारी participants हैं would be able to provide this undertaking. Then we move on to Form 4, which is applicant company's information. It is a very simple form. इसमें आपने अपना legal name जो है applicant का, वो company का नाम लिखना है. Then you just need to tick कि आपकी public listed company है, private limited company है, if it's a partnership or a sole proprietorship. So इसमें फिर आपने head office address लिखना है, incorporation का place, registration की place, फिर date of incorporation, applicant's authorized representative, telephone numbers, fax, emails, और आपने अपने directors की या partners की, owners की, इधर आपने जो information है, नाम, nationality और CNIC, NICOP या passport number provide करना है. So it's very simple and it's very short. Then we move on to Form 5. So Form 5 is basically the key business information. So when we talk about the key business information, we've tried to cover the major elements of जो हमें information चाहिए होगी in order to evaluate your company, and then obviously against the evaluation criteria which is provided later in this document. So इसमें आपने अपने name of major key customers provide करना है, तो आप अपने ये key customers year wise provide कर दें. Obviously 2019 में आपका कोई और key customer हो सकता है, 20 में और 21 में अगर same है तो आप तीनों में same. Then total sale into the face value multiplied by the face value of shares. So ये अगर आपका 10 रुपए की face value का share है और आपके पास 5 लाख shares हैं, तो आपका जो paid up capital होगा वो 50 लाख हो जाएगा. So इसी तरह से आपने सबने अपनी कंपनीज के हिसाब से paid up capital and PKR प्रोवाइड करना है. Reserves of unappropriated profit, basically ये वो reserves हैं जो over the years आपने profit कमाया है और वो accumulate होता रहा है, जो basically जिनको हम distributable reserves कहते हैं. So ये आपके reserves एक separate section, I'm sure आपकी balance sheet का एक part है, जिसमें आप जिसके various नाम से unappropriated profit भी है, general reserve भी है, तो वो आपने इधर mention करना है for 2018, 19, 20 and 21. अच्छा, इसमें जो last part है कि आपने सिर्फ ये टिक कर देना, क्योंकि स्टेटमेंट्स आप हमें सेपरेटली एज पार्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपने सिर्फ इधर ये टिक कर देना है सॉरी कि इधर आप किस ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इफ द एप्लीकेंट इज ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, अगर एप्लीकेंट ऑपरेशनल नहीं था लास्ट 3 इयर्स में, फर्ज करें 2021 में ऑपरेशनल था, 2020 में ऑपरेशनल था, तो उन साल का डेटा प्रोवाइड किया जाए. So ताकि अगर नहीं है तो obviously we can't have that data, right? So ये key business information है जो आपने provide करनी है. It's very plain and simple. हमने कोशिश की है कि जितना इसको PSEB ने actually कोशिश की है कि उसको जितना आसान बनाया जा सके उसको बनाएं. So then there is Form 6. Form 6 में basically हमने key management की CVs के हवाले से बात की है, क्योंकि it is a very important element of any IT company के founders, management, like any other company, but IT में ज़्यादा preference, क्योंकि obviously IT का तो main asset is human resource in terms of development and growth of the company. अच्छा, तो इसमें हमने name of company, proposed position, name of staff, ये हर key management के लिए separately बनाया जाएगा. So Form 6
कि आप अगर 6 अपने की मैनेजमेंट पर्सनल की ये प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फॉर्म 6 में ही आप ये बेसिकली 6 separate documents प्रोवाइड करेंगे. So form 6 is going to be applicable for one participant का एक one key management personnel का एक फॉर्म बनेगा. So इसमें हमने educational qualification, membership of professional societies, other training, countries of work experience, languages, employment record, ये सारी चीजें आपने फिल करनी है, which is very basic. So ये basically हमारे forms इधर cover हो जाते हैं सारे. So in total there are 6 forms. Then the most important part of this document is the TOR part 2, which is the evaluation criteria. So the applicant companies' firms would be evaluated based on the below mentioned criteria. So it is very important to understand that the criteria are subject to complete submission of mandatory documents. So all the participants, I would like to request कि जो भी आप documents submit करें जो मैंडेटरी, वो मेक श्योर करें कि आपकी पूरी चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके कंप्लीट हों. एंड आई एम श्योर सारी पार्टिसिपेंट कंपनीज की ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंप्लीट होंगे. सो दिस इज मैंडेटरी. तो मिनिमम स्कोर जो हमने रखा है मिनिमम वो है 50 मार्क्स टू बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, तो क्या हम इसको बेसिक कट ऑफ पॉइंट जो रखा है वो 50 मार्क्स रखा है, विच इज अगेन to encourage all the companies to participate. कि हो सकता है कि आप इस राउंड में ना हो सकता है कि हम आपको रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ थोड़ा सा एडवाइस करें ताकि आप नेक्स्ट राउंड पे इस पे पार्टिसिपेट कर सकें. सो इट इज हम लोग का ये जो 50 मार्क्स का कॉन्सेप्ट इट इज टू encourage as many companies as possible. फिर एक ऑब्वियसली हमारी एक कमिटी है PSEB की, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड सिलेक्शन कमिटी, जिसमें ऑब्वियसली के उसके पास फाइनल राइट्स होते हैं सिलेक्शन के और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और मिनिमम स्कोर्स को प्रोसेस करने का एक पूरी कमेटी है हमारी. सो आई जस्ट मूव ऑन टू स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं. सो अगर आप देखें नंबर 1 इज द टोटल सेल्स. सो इसमें हमने बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स अलॉट करे हैं इस वाले पोर्शन के लिए 10. इसमें अगर आपकी कंपनी की सेल्स एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप प्रोवाइड करेंगे, दो स्टेटमेंट्स कुड बी फॉर ईयर. आप ऑब्वियसली आप लोगों के ईयर एंड्स फर्क होंगे, जिसमें कुछ ईयर एंड्स होंगे जो जून 30th के होंगे, कुछ ईयर एंड्स होंगे जो दिसंबर 31st के होंगे. सो आप लोग को उसी हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, जिसमें अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के में अगर आपकी सेल्स इज लेस देन 100 million रुपीस तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ग्रेटर देन 400 million है तो 10 मार्क्स मिलेंगे. और बीच में हमने और थ्रेशोल्ड्स मेंशन किए हुए जिसमें 100 to 200 है, 200 to 300 है, 300 to 400 है. इसको हमने बेसिकली टोटल सेल्स की ये मार्किंग है. फिर ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ऑलवेज एन एडेड advantage to any company in terms of generating revenue. तो एक्सपोर्ट सेल्स को भी हमने इधर वेटेज देने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग में से बहुत सी कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस भी कर रहे होंगे. तो ऑब्वियसली एंड PSEB का भी यही एक विजन है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को भी ज्यादा प्रमोट किया जाए. तो हमने एक्सपोर्ट रेवेन्यू का एज ए टोटल सेल्स भी हमने उसकी भी एक स्कोरिंग रखी हुई है. It starts from less than 10% of your total sales revenue to greater than 40% of your total sales revenue. इसके भी maximum marks जो हैं वो 10 हैं और minimum marks जो हैं वो 2 हैं. and बीच में अगर आप देख सकें तो thresholds हैं 10, 20, 30 and 30, 40. So उसी हिसाब से हमने उसकी markings allot की हुई हैं. Then there is profit after tax, which is again very important, क्योंकि the profit after tax is important for the valuation, benchmark relative valuation of your company amongst your peers. So उसकी एक marking हमने obviously उसकी भी एक marking है. So अगर आप देखें less than 30 million अगर आपका profit है तो 2 marks हैं, and greater than 100 million है तो we have allotted 10 marks, और बीच में इसके भी thresholds हैं. So obviously profit again is a very important element. तो हमने
हर कंपनी को कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं जहां वो थ्रेशोल्ड में फॉल करे तो उसको हम कुछ ना कुछ मार्क्स एलोकेट करें ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंपनीज. अब पेड अप कैपिटल. So paid up capital again is very important in terms of structuring the transaction, and capital structuring is very important when we take a company for listing on the main board or on the GEM board. This actually is important because हमें इसका जो कंपनी के जो शेयर्स इशू करने हैं वो उसकी वजह से कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डाइल्यूशन फेस करनी पड़ती है. तो उसको देखने के लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चरिंग देखनी पड़ती है कि डिजायरेबल विन विन सिचुएशन हो, जो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो और कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो. तो इसमें भी हमने और शेयर पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने का मैंने आप लोग सबको एक इनिशियली तरीका भी बता दिया था. तो बेसिकली इट्स नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by the face value of shares. So अगर 5 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, तो 50 लाख का आपका पेड अप कैपिटल है. इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि एक क्राइटेरिया, एक थ्रेशोल्ड्स बना दिए गए कि लेस देन 20 मिलियन अगर पेड अप कैपिटल है तो 2 मार्क्स हैं, 150 मिलियन से ऊपर है तो 10 मार्क्स हैं. और इसी तरह के आपके ईयर एंड्स पे डिपेंड करता है. ये दिस इज बेस्ड ऑन the financial information available as part of your audited financial statements. इसमें जो भी सवाल होंगे obviously हम towards the question Q&A session लेंगे, but मैं आगे बढ़ता हूँ इस पे. So reserves, retained earnings, unappropriated profit. So this is also very important and this is kind of interlinked with the paid up capital. क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि पेड अप कैपिटल कंपनीज का छोटा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम है, बट रिजर्व्स इतने होते हैं उनके कंपनीज के पास कि हम उनके नए फर्दर शेयर्स इशू कर सके, रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर सके, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी डाइल्यूशन पे कम से कम इम्पैक्ट आए और उसको हम बेहतर से बेहतर बना सकें ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिविटी एज फ्लोर प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो भी हम उसको डिस्कस करेंगे. इसके हवाले से भी कोई क्वेश्चंस हो, वी कैन टेक दैट इन द ड्यूरिंग द Q&A सेशंस. नीचे सो ये एक 0.6 हमने बेसिकली इसमें कोई क्राइटेरिया सच मार्किंग का हमने थ्रेशोल्ड्स नहीं बनाए क्योंकि इट्स अ वेरी सो इसमें हमने डिटेल्ड कॉर्पोरेट प्रोफाइल मांगा है कंपनी का, जिसमें बेसिकली ग्रुप का डेटा, वी वांट द कंपनी टू प्रोवाइड ग्रुप एंड एसोसिएटेड कंपनीज का जो डेटा है, बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, existing products, services portfolio, geographical presence, and operating locations, HR resources. Again, as I said, IT companies के लिए that's very important. Major milestones, capital structures, shareholding detail, and website, obviously सारी details. तो ये अगर इसमें I would request कि आप लोग एक अपनी detailed information, corporate profile, एक काफी इन सारी चीजों को अगर cover करके आप लोग भेजेंगे, it's going to be very easy for and important. इसलिए भी है कि एक तो आसानी भी हो जाएगी और दूसरा आपकी चीज जो आप लोगों की अचीवमेंट्स हैं वो उसको बेसिकली पॉइंट्स या स्कोर असाइन करना कमेटी के लिए बहुत आसान हो जाएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना एक डिटेल्ड प्रोफाइल जरूर शेयर करें कवरिंग ऑल दीज एलिमेंट्स. फिर ऑब्वियसली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. इसमें अगर आपके पास ऑब्वियसली लास्ट 1 ईयर का अगर ऑडिट अवेलेबल है वो 3 मार्क्स हैं उसके. अगर लास्ट 3 इयर्स आपके पास अवेलेबल है तो 10 मार्क्स हैं. ऑब्वियसली इसकी हमने रीजन इसका ये है कि जितनी मतलब जितने टाइम से ये आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली आपकी कंपनी बेहतर तरीके से कंप्लायंट है, बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रही है. तो और इसके नीचे अगर हम आएंगे तो और भी हमने QCR रिलेटेड मार्किंग भी करी है. ये जो मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया था, पर्पस प्रोसीड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू लिस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड the growth potential
और फिर सारी कैश कॉल की ये चीज़ों को समझने के लिए हमारे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास प्रोजेक्शंस भी हो, ताकि हमारे पास फ्यूचर आउटलुक कंपनी का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर आउटलुक हमारे पास अवेलेबल हो। फिर हमारे पास अगर प्रोसीड यूटिलाइजेशन अवेलेबल होगी तो उसको हम मैप कर सकेंगे कि कितनी रियलिस्टिक प्रोसीड यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लाइड वैल्यूएशन और इंडिकेटिव वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज कंपेयर्ड टू द peers already which are already listed in the exchange. तो फिर हमारे पास as I said earlier as well कि कैटेगरी ऑफ ऑडिटर की भी हमारी मार्किंग इम्पॉर्टेंट है। ये कैटेगरी प्रोवाइडेड है से आप अगर सर्च भी करेंगे स्टेट बैंक की एक पैनल है लिस्ट ऑफ फर्म्स का ऑडिटर्स का, तो उसमें कैटेगराइजेशन हुई हुई है। अगर कैटेगरी ए ऑडिटर है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर ऑब्वियसली प्रेफर करता है कि कैटेगरी ए ऑडिटर हो, तो उसकी मार्किंग ऑब्वियसली बेहतर है बाकियों से। तो कैटेगरी ए को हमने 5 मार्क्स असाइन किए हैं, कैटेगरी बी को 3, कैटेगरी सी को 1 मार्क असाइन किए, इसके मैक्सिमम मार्क्स 5 हैं। अब आप अगर पॉइंट 10 पर आए तो पोजीशन हेल्ड बाय फाउंडर्स, स्पॉन्सर्स, मेजर शेयर होल्डर इन द कंपनी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एक्चुअली अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो स्किन इन द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्पॉन्सर्स एंड फाउंडर्स। तो इससे ऑब्वियसली जब उनका एक्टिव रोल होता है तो कंपनी की इट इज अज्यूम्ड दैट कंपनी की गवर्नेंस कंपनी का इज ड्रिवन बाय द पैशन ऑफ the sponsors. So that is very important for a lot of investors. तो उसको भी हमने इधर अगर नो एक्टिव रोल है तो हमने इसकी कोई मार्किंग नहीं दी है, एंड हमने इनकरेज किया है उन कंपनीज को जिनमें स्पॉन्सर्स और फाउंडर्स और मेजर शेयर होल्डर्स का एक्टिव या नॉन एग्जीक्यूटिव रोल भी हो। अगर एक्टिव रोल है, एग्जीक्यूटिव रोल है जिसमें हम सीईओ, सीटीओ, एग्जाम्पल दिया CFO, अगर इस तरह के रोल्स हैं तो उसको हमने 5 मार्क्स असाइन किए हैं। एंड आई बिलीव majority of the IT companies have such roles held by the sponsors or founders or major shareholders of the company. And फिर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव रोल भी है लाइक अ बोर्ड पोजीशन, तो वो एडवाइजरी पोजीशन, सो उसको भी हमने मार्क्स असाइन करने की कोशिश की है। That's 2 marks, so maximum marks for this part is 5. So that's basically a rundown of the evaluation criteria and the forms. Now I would like to open the floor for Q&A. तो बेहतर तरीका ये है कि हम लोग जो हमारे पास क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आ रहे हैं वो भी हम ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन रेज योर हैंड, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रेजिंग योर हैंड। आप यू कैन रेज योर हैंड, देन वी विल अलाउ यू टू काइंड ऑफ आस्क द क्वेश्चन एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। सो एवरीबॉडी, द फ्लोर इज ओपन फॉर Q&A. अच्छा, बहुत लोगों ने ये प्रेजेंटेशन हमसे PSX वाली प्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट करी है, so I would request the PSX team if it's possible for them to share this presentation with the participants. Yeah, I think we will share it with you, the equity team, and then you can share them. I think that works better. Great. So that's fair enough. अब अदाम साहब, मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा थोड़ी सी एक एक्सप्रेशन के लिए मुतालिक। जी सर। हमने जो एक यहाँ पे एक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया था फर्निशिंग ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ ऑडिट अकाउंट्स, जैसा आपने करेक्टली एक्सप्लेन किया कि बेसिकली कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर क्लोज होते हैं, कुछ दिसंबर में, मार्च में या जून में। तो ऐसी कंपनी को कि हमने जो मार्किंग करनी है दैट विल बी बेस्ड ऑन द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021। तो 22 के हो सकता है काफी कंपनी के अभी ऑडिट हुए नहीं है और वो जाके क्लोज होंगे अक्टूबर वगैरह में। तो कंपनीज आर हाईली एनकरेज कि जिनके फाइनेंशियल ईयर्स क्लोज हुए 5-6 महीने हो गए या 8-9 महीने हो गए, दे आर एनकरेज टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट अकाउंट ऑल्सो। तो वो मैनेजमेंट अकाउंट में एक अच्छी आउटलुक मिल जाएगी। हो सकता है पिछले साल किसी कंपनी के अकाउंट से ऑडिटेड, उसके अंदर उसकी सेल है 100 मिलियन, लेकिन आगे द कंपनी हैज परफॉर्म वेरी वेल और उसमें कुछ 300 मिलियन पे चली गई है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। आप भी उसको एक्सप्लेन करना चाहें ताकि फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेंट, ताकि वो उसके अंदर उनकी मार्किंग अच्छी की जाए।
तालिब साहब, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। इसमें बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाएं, इसमें बिल्कुल हमारे लिए बेहतरी होगी मार्किंग इन टर्म्स ऑफ मार्किंग। और ऑब्वियसली क्योंकि जैसे आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि जून 30 के बाद ऑब्वियसली काफी टाइम गुजर गया है, अबाउट 8 मंथ्स 9 मंथ्स गुजर चुके हैं। सो उसको भी हम लोग कवर करने के लिए इट वुड बी ग्रेट इफ द कंपनीज कुड आल्सो शेयर देयर मैनेजमेंट अकाउंट्स अलोंग विद द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। So I have a question here. How long the process takes provided all the documentation and requirements are fulfilled? So it's very so मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जेम बोर्ड is basically इधर जो requirement, जैसे रायदा ने भी cover किया, the requirements at the GEM board are relatively relaxed when we talk about the comparison between the main board and the GEM board. So इसमें हमें जो documents वगैरह अगर आप submit कर दें, so it's a process of about, let's say about, क्योंकि review करता है PSX इसमें, so उसमें हमें 4 weeks लग सकते हैं उस पूरे review process में, and the documentation process, it really depends on the company कि कितनी preparedness है, but अगर prepared company हो तो I think for 2 to 3 weeks में documentation भी हो जाती है, and we can develop the IM, and if everything is ready. So I think 6 weeks to 8 weeks के अंदर the end-to-end process can be completed depending on the preparedness of the company. और minimum funding available, देखिए इसमें minimum और maximum funding में इसलिए आपको नहीं कह सकता कि इसमें basically it really depends on the existing financial position of your company and the future growth outlook. So एक ऑब्वियसली कंपनी की एक अपनी फंड रेजिंग की कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ जो ये हम प्रोसेस रन करते हैं, तो ऑब्वियसली इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. सो आई थिंक जब आप अपनी कैश कॉल भेजेंगे, मतलब शेयर करेंगे प्रोसीड यूटिलाइजेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स, विल बी इन अ बेटर पोजीशन to answer that question. But to give you an overview of this, I think there's no minimum and maximum. We were the first ones to list the company on this board. हमने to a little more than 200 million हमने raise करे थे. Then there has been a company जिसने 500 million raise करे. So there's no minimum or maximum on this board. It depends on the financial position of the company. There's a question here. How much of a 10 का multiple? So every rupee that the company earns after tax, the investor is basically ready to pay 10 rupees for that company, right? For every rupee earned. So इसी तरह से अगर आपकी profitability, again depending on the structure of your company, the capital structure, अगर आपकी profitability let's say 2 रुपए per share है और हम 10 का multiple assign करते हैं as as a benchmark जो available हो IT companies का जो comparative benchmark हो, तो 20 रुपए की आपकी price होगी. So इसको obviously जितनी आपकी profitability होगी उसी हिसाब से हम इसको map करेंगे इस pricing को. So I hope I have answered your question. And the other way of getting your company listed is through a book building mechanism. So book building mechanism में there is Pakistan based. So वो there is definitely a possibility, and उसमें फिर हम उसी तरह से आपकी valuation criteria में आपकी कंपनी को वो करेंगे. बट इसमें तालिब साहब भी अगर थोड़ी रोशनी डाल दें. थैंक यू अब्दान साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बेसिकली आईटी कंपनी को, क्योंकि बहुत कम कंपनियां लिस्टेड है मेन बोर्ड के ऊपर, जैम तो अभी शुरू हुआ है और ये प्रोसेस है, कंपनियों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसके अंदर बेसिकली एंटर हो और अपना कैपिटल रेज करें. मोस्टली कंपनियों का मॉडल यही होता है बेसिकली कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी कुछ कंपनियां बाहर बनाई हुई हैं, या उनके स्पॉन्सर या उनके भाई या कोई दूसरे रिलेटिव वगैरह ऑन करते हैं, उनके अंदर उनका स्टेक है. तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे हैं बेसिकली वो जब अपनी वैल्यू बताते हैं, किसी की सेल आईडी थे कि 100 मिलियन है, किसी की 200 मिलियन है, लेकिन जब हमारे उनसे डायलॉग होते हैं तो पता लगता है कि जी दे आर बेसिकली देयर रेवेन्यू एज अ ग्रुप मुख्तलिफ जगह पे, चाहे उनकी ऑनरशिप है या भाई के नाम पे है या किसी और के नाम पे है या किसी में वो शेयर होल्डर है,
वो तो $20 मिलियन का बिजनेस कर रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो जैसे आपने करेक्टिव बनाया, फिर ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि उनकी वैल्यूएशन को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी जो फाइनल एक कंसोलिडेशन है वो कैसे की जाए। तो दैट इज वेयर द बेसिकली कोई रिस्ट्रक्चरिंग कम टू प्ले। तो उसके अंदर एक यही है कि बेसिकली एक अंडरटेकिंग इनसे वो कंपनी अपनी प्रोवाइड ये कर सकती है, क्योंकि जब इनका मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन बनेगा तो उससे पहले टोटल स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी। तो इसके अंदर ये अपनी एक अंडरटेकिंग हमें प्रोवाइड करें कि बेसिकली उनका ये एक प्लान है कि विद इन 2 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर, तो प्रोजेक्ट हमारा 3 साल चलेगा। अगर उसमें एक मिनिमम बेंचमार्क्स वो सिक्योर कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का, तो वी कैन रिटेन ऑन द बोर्ड। और उनकी जो अंडरटेकिंग के मुताबिक इन कंपनियों को या तो वो सब्सिडी बना लेंगे ताकि वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर उनका सेल्स और ये प्रॉफिटेबिलिटी ऐड हो जाए, ताकि उनका जो कॉल फॉर कैपिटल रेजिंग है वो जस्टिफाई हो जाए। तो उनको बेसिकली फिर हम एडवाइस करेंगे, एडवाइजर के थ्रू तो वो टोटल रीस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करेंगे एंड दे विल गेट द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये तो है, ये आप भी देखें जनरली है ये मेल फीमेल जब आपके साथ में आपसे ऊपर से वो एक आ जाती है को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, वैल्यूएशन कैसे होती है, और कोई जो इमर्जिंग इकोनॉमी के जेम बोर्ड के रेगुलेशंस हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप के थ्रू, जो इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अच्छा इनिशियल जो है जो कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है, उनके चेयरमैन उनके मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक साहब रायता, इन्होंने हमें श्योर किया और एक्सटेंड किया, मतलब एक हेल्प एक्सटेंड की कि जो कुछ भी आईटी कंपनियों को प्रमोट करने के लिए जेम बोर्ड पे इनसे हो सकता है, जहां जहां रिलैक्सेशन दे विल बी एक्सटेंडेड। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आईटी कंपनी को मिले, उससे फायदा ना उठाया तो और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक लाइन लगेगी। अगर 2-4 कंपनियां शुरू के स्टेज के अंदर हमारी लिस्ट हो जाती है तो इंशाल्लाह वो एक विजन को प्रोवाइड करेंगे, कंपनियों को कंफर्टेबल भी प्रोवाइड होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि यस कि आईटी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स का जो है स्टेक या उनका एक पोटेंशियल कुछ ना आने से डबल आना को कैपिटलाइज करें, पार्टिसिपेट करें। और अगर खुदा ना कहा तो कोई कंपनी बेंचमार्क से नीचे की है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, प्रोफेशनल एडीडी के थ्रू भी और जाएंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल्स को कहीं पे भी कोई स्टेटस पीएसईबी से हेल्प दिया सकती है कि वाले उन्होंने अपना पूरा ये डिटेल शेयर कर दी, फायदा उठाइए और इंशाल्लाह वी विल मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Talib sir. Thank you very much. Thank you to all the participants.